crippled airliner falls towards the Indian Ocean. उस प्लेन में ना फ्यूल है और ना ही कोई इंजन पावर है उसके पास. Both engines are out. That's it. उस प्लेन के कैप्टन वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया. To safely land this aircraft on an open ocean. The Comoros Island, a remote holiday playground in the Indian Ocean. यहाँ पे दिन जो है वो बिताए जाते हैं playing in the sand and splashing in the gentle waves. But in late 1996, the peace of this island is shattered. क्योंकि एक प्लेन उसके समुद्र तट की तरफ बढ़ रहा है और वो प्लेन जो कि 100 मील ऑफ कोर्स है अभी. उस प्लेन में कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ है, कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्लेन ओपन समुद्र की तरफ नीचे गिर रहा है आसमान से. इथोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट ETH 961 is on a routine journey from Addis Ababa, Ethiopia to the Ivory Coast. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भामरी, लेकर के आया हूँ एक नया एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का. ये शो जो आप हर हफ्ते सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. और इस शो में हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं कुछ ना कुछ इस धरती पे घटे किसी न किसी दुर्घटना या डिजास्टर की. और आज के शो में हम चर्चा करेंगे इथोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट 961 की. 23 नवंबर 1996 की ये घटना है. द कैप्टन ऑफ दिस एयरक्राफ्ट इज लेओला बाटे, who is 42 years old, और उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है. 7,300 kilograms. Center tank is 0. उनके पास तकरीबन 11,000 घंटे प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस है. Total fuel is 14,500 kilograms. Check. इथोपियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट है ET 961, it will stop briefly at Nairobi, Brazzaville and Lagos. और उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है एबिजोस. उस प्लेन में जो है सिर्फ उतना ही फ्यूल है जितना कि फर्स्ट लेग के लिए चाहिए होगा, और बाकी फ्यूल उसको नायरोबी में मिलेगा. अगर प्लेन में काफी कम फ्यूल हो तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ऐसा समझा जाता है. कैप्टन अबाटे और उनके को पायलट यूनिस वबूरिया ये समझते हैं कि उनका काम खत्म हो जाएगा अगले 12 घंटे में, जब वो आइवरी कोस्ट में अपना इस जहाज को उतारेंगे फाइनल लेग के बाद. That day was a bright day, clear skies, everything was fine. जो पैसेंजर्स इस प्लेन में सवार हैं वो मिक्स्ड हैं. कई तो इथोपियंस हैं और बाकी दूसरे जो है बाकी अलग अलग अन्य देशों के हैं, जो कि या तो बिजनेस पे ट्रैवल कर रहे हैं या वो उनका कोई प्लेजर ट्रिप है. ये माइकल उडेनियो जो कि एक केनियन है बाय नेशनैलिटी, वो एक बिजनेसमैन है और वो इकोनॉमी सेक्शन में बैठे हुए हैं और वो वापस अपने घर जा रहे हैं नायरोबी. I spent the whole of Friday trying to get on that flight, calling the airline every hour or so. I remember Friday night, about 11 o'clock, I called them again and they said, look, just come to the airport, we'll see if we can find a seat for you. So I sometimes feel I put myself on that aircraft. प्लेन के अगले भाग में जो कि एक अमेरिकन है, फ्रैंक पोंचो हडल, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के काउंसलर जनरल हैं इन बॉम्बे, इंडिया, वो भी ही इज सेटलिंग डाउन इन हिज सीट. My wife, Palm, and myself decided to take a trip to Africa and go on safari. I wanted a daytime flight because it was safer.
So I picked Ethiopian Airlines, which had a good reputation. It was one of the 2 carriers in all of Africa that was FAA certified. इन दोनों की सीटों से आगे हैं एक लेजेंडरी न्यूज कैमरामैन और जर्नलिस्ट माओ अमीन। वो काफी फेमस हैं, खासकर इथियोपिया में। 1984 में इन्होंने ऐसी फोटोग्राफ ली थी जिसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया था। Mo Amin was, I think, the most famous news cameraman of his time, and also one of the strangest of characters. उनके फोटोग्राफ जो ली थी अबाउट द इथियोपियन फेमिन, और उसकी वजह से काफी एड इथियोपियन गवर्नमेंट को मिलने लगा था, जिसकी वजह से कि वो इस स्टारवेशन प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर पाए थे जब उनके यहाँ सूखा पड़ा था। अमीन काफी फेमस है फॉर नेवर गिविंग अप इन अ फाइट। उन्होंने अपना कैमरा और अपना नाक हर मेजर कॉन्फ्लिक्ट जो कि अफ्रीका में घटित हुई है उसमें अपना घुसाया है, अपना नाक और अपना कैमरा, जिसे आप कह सकते हैं कि वो कभी उन्होंने बैकआउट करना नहीं सीखा इन अ कॉन्फ्लिक्ट। वो जब इथियोपिया में एक बार फिल्म ले रहे थे तो उन्होंने बम धमाके में अपनी एक बांह भी खोद दी थी। एक ब्रीफ बिजनेस ट्रिप के बाद वो भी आज अपने घर लौट रहे हैं नायरोबी में, और जब तक सारे पैसेंजर्स इस प्लेन को बोर्ड नहीं कर लेते उसके बाद ये प्लेन जो है 175 लोगों को लेकर चल रहा है। कैप्टन अबाता जो है वो इस रूट से तो काफी फेमिलियर हैं और उससे भी ज्यादा फेमिलियर हैं इस एयरक्राफ्ट के साथ। इस एयरक्राफ्ट को उन्होंने और उनके बाकी इथियोपियन एयरलाइंस के साथियों ने नाम दे रखा है ज़ूलू। और जब प्लेन आकाश की तरफ उड़ने लगा है तो 3 इथियोपियन मैन हैव आल्सो सेटल्ड डाउन इन देयर सीट्स। वो तीनों ही अपने 20s में है। ये प्लेन तो नायरोबी जा रहा है, लेकिन ये तीनों इंसान उस जगह के जाने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। उनका मन करता है कि प्लेन कहीं और ही चले। We took off. Everything was fine. The cabin crew called us. She asked if we want to have coffee or tea, whatever. Yeah, thank you. Coffee? Make it 2. प्लेन अब 12,000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है और तभी ये तीनों they make their move. And I heard a noise at the back, somebody shouting, and when I looked back, he was running up towards the front, pushing the air hostesses away. There were 2 guys zipping down the plane, yelling something incomprehensible. Then a guy sort of gliding down silently came right after him, and I said, uh-oh, it's a hijacking, because they're coordinated. Initially, we sort of just looked at each other and wondered what was going on. People didn't say much immediately. There was some kind of noise in the cabin, and I heard the cockpit door slamming open. Just bang! The 3 men barged through the door and armed themselves with the cockpit's fire axe and fire extinguisher. Get out! Get out! There was, a little confusion up in the front as if they were, attacking the pilots. There were 3 guys, they were shouting. They came straight to the co-pilot and they started hitting him. Get up! There's 11 of us. If you don't do what we say, we'll blow this plane out of the sky. I told them, okay, don't hurt him. I'll do whatever you want. जो पैसेंजर्स प्लेन के आगे के हिस्से में बैठे थे, they are concerned but have no idea what is happening. कैप्टन अबाटे जो हैं वो इन हाईजैकर से अकेले ही भिड़ रहे हैं। And unlike other pilots, कैप्टन अबाटे को इस सिचुएशन का एक्सपीरियंस है क्योंकि वो पहले भी 2 बार हाईजैक किए जा चुके हैं। The first hijack was a local flight, and then 2 hijackers who had a hand grenade
came into the cockpit, and they forced her to fly to Nairobi. अबाटे की सेकंड हाईजैकिंग पहली से कुछ सालों के बाद ही आई थी, जब वो पायलट कर रहे थे बोइंग 737 जहाज. The hijackers again held the hostess hostage, and they came into the cockpit. They told me it was hijacked, and they went to fly to Sweden. उन पहले दोनों इंसिडेंट्स में कोई भी जो है इंजर या मारा नहीं गया था, क्योंकि उन दोनों इंस्टेंसेस में कैप्टन अबाटे ने he had landed the plane safely. इस एरिया में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत ही उथल पुथल वाली है, इसलिए जो हाईजैकिंग है इट इज अ वेरी टेरिबल रियलिटी. 1990 और 1996 के बीच में there have been 10 Ethiopian Airlines which have been hijacked. और इस बार तो हाईजैकर्स बहुत ही एकदम चौंका देने वाली स्टेटमेंट कहते हैं कैप्टन से. Fly to Australia. What? Fly us to Australia. We don't have enough fuel to get to Australia. It's too far. We can go to Nairobi, or Zanzibar, or Dar es Salaam, and then refuel, and then go to Australia. वो जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया. उस प्लेन में सिर्फ 3.5 घंटे की उड़ान का ही फ्यूल था इस समय प्लेन के अंदर. लेकिन उनको हाईजैकर्स को अभी तक इस बात का पता नहीं है. वो तो जो प्लेन की इन फ्लाइट मैगजीन थी उसी को पढ़ के आए थे, जिसमें कि लिखा गया था कि टोटल फ्लाइंग टाइम ऑफ अ बोइंग 767 कितना घंटे का होता है. 11 hours. It won't take more than 10 hours to get to Australia. We don't have 10 hours of fuel. It says 11 hours. We don't carry that much fuel. We only carry what we need. They thought I was bluffing. They were convinced that the airplane was able to fly to Australia. कैप्टन अबाटे जो है वो एकदम शॉक रह जाते हैं, क्योंकि बाकी किसी को नहीं पता कि हाईजैकर्स क्या डिमांड कर रहे हैं. अगर वो फॉलो करते हैं जो हाईजैकर्स ने कहा है करना, तो उनका प्लेन जो है कभी भी समुद्र में क्रैश हो जाएगा. और अगर वो नहीं करते जो हाईजैकर्स कह रहे हैं, तब उनके मुताबिक, हाईजैकर्स के मुताबिक, वो कभी भी इस प्लेन को आसमान से उड़ा देंगे. इथियोपियन एयरलाइंस का एक जहाज हाईजैक कर दिया गया है जब वो अफ्रीका के ऊपर उड़ रहा था. तो हाईजैकर्स की डिमांड है कि वो उनको प्लेन को ऑस्ट्रेलिया लेके जाए, जो कि तकरीबन 10 घंटे दूर है, फ्लाइंग टाइम है. लेकिन प्लेन के पास तो सिर्फ 3.5 घंटे का ही फ्यूल है. ये बात फैल जाती है हर जगह कि प्लेन हाईजैक हो गया है, लेकिन उसकी डेस्टिनेशन के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है. जो फ्लाइट स्टुअर्डेस है वो जो है अपने बेस्ट पोर्ट्रे करती हैं, अपना ऐसे ही काम कर रही हैं जो कि सिचुएशन में जो है बेस्ट उनको लगता है करना. We started to ask the stewards what was going on, and they indicated that there was a hijacking. Nervous and uncertain, the passengers continue to wait as to what will happen next. It was as if nobody wanted to sort of rile the hijackers, because they hadn't slapped people around. It wasn't a sort of a Middle Eastern style where they shoot somebody in the head to make a point, or they were basically leaving the passengers alone, provided that we didn't do anything. And that was enough for us. This is how much fuel we have. If we had fuel for 11 hours, it would say 60,000 kilograms. But we don't carry that much fuel. We only carry what we need. हाईजैकर्स को ऐसा फील होता है कि अबाटे जो है उनके साथ ब्लफ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं रिगार्डिंग दिस सिचुएशन अबाउट द फ्यूल. We have a bomb. Yes. If you don't do what we tell you to, we will blow this plane out of the sky. अबाटे को ऐसा लगता है कि वो ट्रैप हो चुके हैं इस सिचुएशन के अंदर. अगर वो वही करते हैं जो हाईजैकर्स डिमांड कर रहे हैं, तब वो उतना फ्यूल उनके पास नहीं है. और अगर वो नहीं करते, वो फाइट करते हैं हाईजैकर्स से, तो हाईजैकर्स माइट ब्लो द प्लेन आउट ऑफ द स्काई. My feeling tells me that it's not a real bomb, but there is no way that I can challenge that. One of them has a fire axe. That was good enough to do serious damage. You know, if I'm not alive, everybody's not alive. That's it. I want to talk to the passengers.
After about half an hour, the hijackers came on the public address system and they made an announcement that they have taken over the plane. And if anybody tried anything, they had one bomb and they were going to blow it up. Hijackers जो है announcement करते हैं throughout the plane in their native language, French and English. The policy at that time was we should follow the hijackers' instruction. That was before 9/11. And every action taken is to be taken on ground, not in flight. Pilots are trained to fly, not to fight. We were following sort of the standard script, as it were, for passengers, which was to stay out of it, keep quiet, keep cool, let them sort it out, get the plane on the ground. Some people said, oh, maybe we'll go to Sudan, land there, negotiate, and maybe they'll release us after that, or if not, move on to some other place. But it was all speculation. कितने ही सालों से Flint Van Zandt was FBI's chief hostage negotiator. What made this hijacking so unique is that the pilot in command had been the victim of 2 previous hijackings. His success rate was 100%. He probably had a predisposition to, this will end like the other 2 did. I'll be able to get it on the ground. The authorities will deal with it. कैप्टन अबाटे जानते हैं कि ये सिचुएशन जो है पिछली दोनों सिचुएशन से बिल्कुल अलग है. हाईजैकर जो है किसी दूसरी जगह नहीं जाना चाहते अफ्रीका के अंदर, वो जाना चाहते हैं प्लेन को लेके ऑस्ट्रेलिया. एंड अबाटे knows that heading out to the open ocean would be a death sentence. Captain Abate decides to get help. I have to call air traffic control. Why? Because they will be asking why we are changing direction. Tell them you've been hijacked. And tell them where we are going. This area control. This is Ethiopian. क्योंकि प्लेन अभी भी इथियोपिया के ऊपर ही उड़ रहा है, तो कैप्टन अबाटे जो है अभी एडिस अबाबा कंट्रोल सेंटर को कांटेक्ट करते हैं. Addis, Ethiopian 961. There are passengers in the cockpit. Say again, 961? Addis 961. We have been hijacked. We have orders to divert to Australia. 961, Australia, understood. Confirm your souls on board? Souls on board 175. 961, 175 souls on board. क्योंकि प्लेन अब दक्षिण दिशा की तरफ उड़ रहा है, तो एडिस अबाबा ट्रैफिक कंट्रोल उनको हैंडओवर कर देते हैं टू द नायरोबी ट्रैफिक कंट्रोल. ETH Nairobi Center. Confirm you are going to land Australia. Gentlemen, we can't make Australia. We only have 2 hours of fuel. We can't make it Australia. We will make a water landing. ETH 961. Confirm you can't divert to Mombasa. They refuse to land anywhere other than Australia, so we have no choice. Except when we finish our fuel, we will land on water. But with 2 hours of fuel, you can't make Australia. Why don't you land Mombasa? Okay, just a minute. Ababe connects the air traffic control to the cockpit speakers so that the hijackers can listen to the conversation. Okay, I just wanted our hijackers to hear what you are communicating. Okay. And if you have anything to say, go ahead and tell them. Okay. I am advising you that with 2 hours of fuel, you will be unable to reach your destination. And probably you would have to land on the water. The solution is for you to land in Mombasa. Go ahead. The hijackers of ETH 961. If you have copied, go ahead. Waiting to talk. Stand by. Do you want to talk to them? Okay, they say they don't want to talk. They're not willing to negotiate on any terms. Confirm they are ready to land in the ocean and drown. Do you have another alternate aerodrome? Please advise.
have no alternate aerodrome. Sir, I'm in a very tight corner. Enough talk. We will not negotiate. That's bullshit. That's bullshit. They said, follow our instruction. If you don't, we'll blow the airplane up. That's it. Ethiopian 961, Nairobi Control, do you read? There will be no further communication between the aircraft and the air traffic control. तकरीबन 1 घंटा बीत चुका है टाइम जब से कि हाईजैकिंग शुरू हुई थी. बाकी पैसेंजर्स को कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है कॉकपिट के अंदर. No one knows what is actually happening in the cockpit. For the rest of the passengers and the crew, the flight has settled into an uneasy routine. There's a lot of time people were just whispering, and we were trying to figure out where we're going, where they're taking us, what's going to happen. And at least the people I was sitting next to, we thought that we would go from airport to airport, and there would be negotiations, and finally we would be released. We went generally south, and there was an eerie, edgy, nervous calm. Nobody's talking much, and people are in their own little individual worlds. With only a fraction of the fuel needed to fly to Australia, Abate decides to defy the hijackers. Without their knowledge, he continues to fly south instead of going to east to fly to Australia. I started following the African coastline because in case anything happens, we'll have a place to ditch or land safely because most of the cities are by the coastline. Hijackers एक look बाहर की तरफ लेते हैं खिड़की से और पता लग जाता है उनको कि they have been tricked. I still see land. Turn the plane. और अब कैप्टन अबाटे के पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है. वो अपने प्लेन को पूर्वी दिशा में मोड़ देते हैं across the open ocean. और अब चूंकि समुद्र उनके नीचे है दिखाई दे रहा है, तो कैप्टन जो है एक नया प्लान के बारे में सोचने लगते हैं. इन लोगों की लास्ट होप है द कमोर्स आइलैंड. I had no chart nearby because it was on the co-pilot side. So I had a small atlas. So I took out that atlas and I saw the Comoros Island. जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट और मेडागास्कर के बीच में पड़ता है. A remote holiday playground in the Indian Ocean. I had no idea what that place was. I never heard of the word Comoros before. I just headed towards it. It was a guess. The Comoros Islands are his last chance to land safely. We just sat and sat for hours. I tried to read the newspaper but couldn't concentrate on it because I was nervous. I wondered how much extra fuel we had because the rule of thumb is you have enough for the alternative airport and then they're supposed to have an extra 45 minutes of fuel beyond that. So roughly 3 hours or so of fuel they had to have. And so after we'd flown 3 hours, I began to get nervous. तभी कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगता है जिसके मुताबिक कि प्लेन के पास अब सिर्फ आधे घंटे का ही फ्यूल बचा है. I need to tell the passengers. There's no need. You know what I'm going to tell them? It's out of my control. The aircraft is going to crash. You wanna die? We're going to die anyway. So, shall we kill you? No more talking. Don't worry. I have the axe. Please. At least let us attempt a controlled landing. I will die along with him. I will show him that I have guts. It's finished. We will die together. With almost no fuel, Abate decides to take his stand. We came over the island. By then fuel was running out. I decided no, we should not go any further than this one. And I started circling that area. लेकिन वो हाईजैकर्स को किस तरह कन्विंस करेंगे कि वो उनको परमिशन दे लैंड करने की. कैप्टन अबाटे को इस सवाल का जवाब बहुत जल्दी ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट ETH
961 will crash into this sea. पिछले 3 घंटे से कैप्टन अबाते अकेले ही लड़ाई लड़ रहे हैं. उनका जो पैसेंजर लाइनर है, it has been hijacked by the hijackers, जो कि चाहते हैं कि प्लेन को ऑस्ट्रेलिया लेके जाया जाए, लेकिन कैप्टन अबाटे के पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो वहां तक पहुंच पाए. कॉकपिट में कितनी ही अलार्म बेल्स बजती जा रही हैं. द कमोर्स आइलैंड, वहाँ का जो एयरपोर्ट है वो नजदीक है, वहाँ पे आराम से लैंड किया जा सकता है, लेकिन जो हाईजैकर्स हैं वो नेगोशिएट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और प्लेन लैंड करने की परमिशन भी नहीं दे रहे हैं कैप्टन अबाटे को. और एट स्टेक हैं द लाइव्स ऑफ ऑल द 175 पीपल ऑन बोर्ड दिस एयरक्राफ्ट. They took whiskey from the duty free, and they wanted me to drink actually, but I refused. और अब फिर से एक अलार्म बजने लग जाता है. एक इंजन में बिल्कुल फ्यूल खत्म हो गया है, and it is now shutting down. Captain Abate is now quickly running out of time. With the airplane being at 39,000 feet in cruise flight, the airplane is not going to run out of gas with each engine simultaneously. There'll probably be a bit of a lag, which in this case there was. The right engine stopped functioning first. First thing I noticed, the engines sound different. Because there's only one engine running. It had a much deeper sound. Captain Abate जो है अब he starts to follow the emergency safety procedures. He starts the APU यानी कि auxiliary power unit. I lost the engine at 39,000 feet. I cannot keep on flying at 39,000 feet with engine failure. It is a generator which provides extra electrical power when one engine is out. कितने पैसेंजर्स को तो अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि सिचुएशन कितनी सीरियस हो गई है, लेकिन कैप्टन अबाटे ये जानते हैं ये बात कि उनका प्लेन कितनी बड़े डेंजर में है. अब जो थ्रस्ट है वो सिर्फ एक ही इंजन से आ रही है, तो प्लेन जो है बहुत ही धीमी गति में चला जाता है और प्लेन की जो धीमी रफ्तार है उस पे जो है हवा जो है इस लेवल पे ज्यादा लिफ्ट नहीं देती प्लेन को. अबाटे को अपना प्लेन नीचे की ऊंचाई में डिसेंड करना पड़ेगा, जिससे कि जहाँ पे कि हवा थोड़ी भारी हो. हवा अगर डेंस होगी वहां पे उस लेवल पे, तो उसका मतलब ये होता है कि हवा जो है प्लेन को ज्यादा लिफ्ट प्रदान करेंगे, जिससे कि वो हवा में एक लेवल पे उड़ सके. Even with one injured and the aircraft losing altitude, the Comoros Island are still within reach of this crippled airliner. जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ पे एक एयरपोर्ट भी है, और अगर कैप्टन अबाटे किसी तरह हाईजैकर्स को कन्विंस कर पाते हैं, तो वो उस एयरपोर्ट पे अपने प्लेन को लैंड कर सकते हैं. It's gone down 1,000. When the engine stops, it descends. It will descend whether you like it or not. कैप्टन अबाटे जो कि कॉकपिट में अब अकेले रह गए हैं, वो जो है सारे पैसेंजर्स को इस सिचुएशन के बारे में जानकारी देते हैं. Ladies and gentlemen, this is your pilot. We have run out of fuel, and we are losing an engine at this time. We're going to make a crash landing. When the pilot came onto the public address system and said that he had no alternative but to crash land, that is when it actually dawned on us and we realized that this was a life and death situation. Captain Abate also makes a desperate call for help. We have already lost one of the engines. Captain Abate also makes a desperate call for help. I ask all passengers to react to the hijackers. Thank you. कैप्टन अबाटे ये भी पैसेंजर्स को बताते हैं कि वो किसी तरह इन हाईजैकर से डील करें, जिससे कि वो प्लेन सफलतापूर्वक रनवे पे उतार सके. Even though I was expecting some kind of movement in the cabin, but I had to do my job. I was doing what I had to do. Keep the airplane in control, fly it. और वो ये भी जानते हैं कि ये जो desperate call for help था, it is a big risk.
And as Captain Abate waits for some action, the passengers are even more confused than ever. He said, react against the hijackers, which is an odd phraseology. Nobody reacted. I think part of it was the way he said it. It was not sort of a normal way in English that you would ask someone to take on the hijackers. But he also was trying to do it enough so they wouldn't notice what he was saying. और उन पैसेंजर्स के बीच में एक इंसान समझ जाता है कैप्टन ने क्या करने को बोला है, और वो थे जर्नलिस्ट और न्यूज कैमरामैन मऊ अमीन। मऊ अमीन ने कभी भी चैलेंज की तरफ अपनी पीठ नहीं दिखाई है, and he has always fight the challenge offered to him. Amin makes his way to the economy section in the rear side of the plane. In the end, the passengers choose not to act. Here is a man who had spent 20 or 30 years in some of the most difficult and dangerous war zones of the world, who'd been beaten up, who'd been shot at, who'd been jailed. He was a kind of alpha male, if you know what I mean. He could talk anybody into anything. He made it like he was going to the bathroom, and then he came back and he started talking to people who were 3 or 4 seats ahead of me. And from his gestures and actions, he was trying to get us to stand up against the hijackers. With your help, we can take them. There's only 3 of them. Come on. Come on. Not knowing what would happen, not knowing what these people were capable of doing. And, of course, the fact that they had indicated that they would blow up the plane if anybody tried anything. Always, always have to measure, am I going to make the situation better or am I going to make it worse? Who's ready to take the chance that your precipitous action against the hijacker might not cause him to set that explosive device off and take the life of everybody on board the plane? In the end, the passengers choose not to act. Captain Abate is still alone with the hijackers. In the cockpit, the hijackers tried in vain to take the control of the plane in order to keep it flying in the sky. It's descending. Don't worry, I'm not the one who's doing that. एक हाईजैकर को ऑटो पायलट को भी डिसएंगेज कर देता है, उसकी वजह से जो है प्लेन काफी भयंकर तरीके से घूमना शुरू कर देता है, हिलना शुरू कर देता है। Don't move! Listen! I am not applying any motion. The aircraft is doing it by itself. He was trying to fly the airplane, he was trying to disconnect the autopilots, all sorts of things. It's all over. We will drop in the ocean. 31? अबाटे एक बार फिर से हाईजैकर्स को बताते हैं कि सिचुएशन कितनी डेस्परेट हो गई है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं इन हाईजैकर्स को। This is 0, and this is coming to 0. I prayed to God. I wish I wasn't in this situation. Now I'm in it, but help me to save these people. Ladies and gentlemen, please sit down and fasten your seatbelts. Do not panic. I was starting to say, oh, I love you, dear. It's been a good ride. My wife is sort of unsentimental, psychiatric nurse, and she tells me, get up, stand up, get our bag down from the overhead, pull out your extra glasses, put them in your pocket, and get some food from me, and I want this, this, and this food. She had carefully picked things that wouldn't make her thirsty. She said, there's not going to be any meal service once we hit the water. और कुछ देर के बाद प्लेन में बिल्कुल भी फ्यूल खत्म हो जाता है। So you're killing everyone? That is all. Sit down. From now on, you can't do anything to me. What? From now on, you can do nothing to me. The other engine stopped, and it sort of went quiet. Then it started to get hot within the cabin. The light started to flicker, and gradually it went out. That's it. Both engines are out. That's it.
Is this what you wanted? और अब $40 मिलियन का प्लेन बन चुका है 100 टन ग्लाइडर। प्लेन में बिल्कुल भी फ्यूल नहीं बचा है और दूसरी तरफ अबाटे के पास भी कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। अब सिर्फ सी के अंदर क्रैश लैंडिंग ही एक ऑप्शन दिख रहा है। Both engines are out. That's it. Is this what you wanted? उड़ने के 4 घंटे बाद Ethiopian Airlines flight ETH 961 is finally out of the fuel. हाईजैकर्स ने प्लेन के ऊपर कंट्रोल जमा रखा है और उन्होंने मजबूर किया कैप्टन को समुद्र के ऊपर से उड़ने के लिए। The loss of the engine power starts rippling through the plane. प्लेन को हवा में उड़ाने के अलावा इंजन जो है काफी सारे इलेक्ट्रिकल एंड हाइड्रोलिक सिस्टम्स में भी मदद करते हैं, वहाँ पावर भेजते हैं। और विदाउट इंजन पावर के कंप्यूटर स्क्रीन्स, ऑटो पायलट और कई और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो अब काम करना बंद कर दिए हैं प्लेन के अंदर। अब इंजन्स तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अ लो टेक सिस्टम जो है वो इट enables the pilot to keep control of some of the functions. The ram air turbine यानी कि RAT is the last line of defense when both the engines fail. A trap door automatically opens and a small turbine या propeller automatically turns out. जो हवा है वो इन टर्बाइंस को मूव करती है जैसे कि कोई विंड मिल होता है, जिसकी वजह से थोड़ी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होती है, which helps the pilot to keep control of some of the equipment. Since it was power off, that means there was no electrical or hydraulic power. The controls were heavy. ये जो टरबाइन से पावर आ रही है वो इतनी नहीं होती कि फ्लैप्स को कंट्रोल कर सके। फ्लैप्स वो चीज होती है जो which slow down the plane during the time of landing. जहां पर भी वो प्लेन लैंड करेंगे, कैप्टन अबाटे को ये करना पड़ेगा कि एट डेंजरसली हाई स्पीड के ऊपर ही प्लेन को लैंड करना पड़ेगा, जहां भी वो चाहते हैं। Power of landing is the power of ditching. Nobody's trained in the world. Flying over the water, you need accurate instruments. I didn't have any of the instruments. Without engine power, a large passenger liner can glide up to 18.5 kilometers for every 1,000 meters it loses in altitude. ये जो प्लेन है जो कि अब 6400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, it can glide up to a distance of 120 kilometers before it hits something. One of the things that the captain's got to worry about now is with both engines shut down, the airplane's going to go down. It's just a matter of where, and that's going to be controlled by the pilot flying. ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है और दुनिया में ऐसे बहुत कम पायलट्स ही होंगे जिन्होंने ये सिचुएशन को फेस किया होगा। 1983 में एक एयर कनाडा के पायलट ने अपने आप को इसी सिचुएशन में पाया था। एयर कनाडा की फ्लाइट 143 it ran out of fuel and landed in an abandoned Air Force strip और उस समय बहुत ही माइनर से डैमेजेस हुए थे to the aircraft और सही मानों में a safe landing without power is possible. कैप्टन अबाटे यही कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह कमोर्स आइलैंड के एयरपोर्ट पे लैंड कर पाए, लेकिन ऑन द फाइनल लेग struggling with the hijackers, he loses his bearing and now is not able to locate the airstrip manually. I was within the vicinity of the airport, so I was keeping the airport in my sight all the time. Then through the struggle, I lost my position. I lost where I was. और फिर से उस एयरपोर्ट को ढूंढने के चक्कर में जो थोड़े बहुत सेकंड्स लगते हैं, उसमें कैप्टन अबाटे ने काफी एल्टीट्यूड लूज कर दिया है और अब उन्हें ये भी नहीं पता कि वो इस एयरपोर्ट के ऊपर सेफ लैंडिंग कर भी पाएंगे कि नहीं। और अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो है पानी पे अपने जहाज को उतारना।
he knew that he was going to have to ditch the airplane. He was going to have to put the airplane down in the water. How he was going to do that was now a different plan because he'd never been trained to do that, not with two engines out. Landing the plane on the ocean is even more dangerous than landing the plane on the ground. If you were trying to crash land on the ground, the airplane would have a surface to slide across. That surface does not exist when you're ditching the airplane in water. The airplane is going to touch down on the water, and then at some point it's going to dig in to that water. When that happens, the airplane's going to try to stop instantly. In order to bring his plane to land safely, Abate faces some unique challenges. Planes such as the DC-9, उनका जो बॉटम होता है एक फ्लैट बॉटम होता है नीचे की साइड से, और जब वो प्लेन पानी में उतरता है तो वो स्किम करेगा and it would slow down very smoothly. लेकिन Boeing 767 में जो है इंजन जो है वो नीचे की तरफ होते हैं below the body and they can act as scoops. वो पानी को पकड़ सकते हैं as the rest of the body it moves forward, और इसी वजह से क्या हो सकता है प्लेन के टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं. It was getting hotter and hotter, so we started to sweat because I guess the air conditioning system was not working since there was no power. And that's when people started to scream, started to panic, looking for life jackets, praying to Jesus, praying to Allah. Some ladies were asking people to go and plead with the hijackers, not realizing that it wouldn't make any difference at this particular time. We didn't have any fuel and that was it. We're going down, but I guess at that time, you know, your hope is all you have. Descending fairly rapidly. The plane is lurching wildly a couple of times. They're fighting up in the cockpit for the controls. It's my responsibility. The passengers must know what's going on. Descend and increase the speed. It doesn't make any difference. Please. All the same, we're going to die. Please maintain calm. Prepare for an emergency landing. Put on your life jackets, but do not inflate them. कितने ही पैसेंजर्स ने कैप्टन की जो इंस्ट्रक्शन थी उनको तो या तो सुना ही नहीं या उनको टोटली इग्नोर कर दिया और वो अपने लाइफ जैकेट्स को इन्फ्लेट कर लेते हैं. I heard a pop, 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 pop back in the tourist class, and everybody panicked and inflated their life jackets. I actually got up on my seat and told people don't inflate your life jackets inside the plane. In the front of the plane, Mao Amin makes a last-minute effort to negotiate with the hijacker. No, sit down. Mo had a desire to dominate every situation he was in. In a situation like that, it would be Mo talking to the hijackers. He would be negotiating with the hijackers. He would be, I'm sure, trying to get the other passengers to face these guys down. लेकिन उनकी बातों का कुछ असर नहीं होता. हाईजैकर्स जो हैं वो they are determined to let the plane crash. और हाईजैकिंग शुरू होने के बाद पहली बार कैप्टन अबाते को कोई मदद मिलती है. The controls. I need help. They're too heavy. We told them, guys, now we are on the last point. You should sit down and fasten your seatbelts. They refused. I never thought I would ditch in my lifetime. I never thought I would lose two engines and ditch in the middle of an ocean. I never thought anything would like that happen in my life. Last few seconds, I remember looking out both sides of the window. I could see water. And then I took the crash landing position. All these things go through your mind. I guess having been brought up in a Christian family, I said my last prayers and said, well, if there is heaven, I hope I get out on the right side of things.
Outside in the window, you could see land at the last minute. And we realized that we were, for the first time, that we were near land, but over water. I used to love that airplane. We used to call it Zulu. In my heart, I was talking to it. So I said, Zulu, you can make it. Now you should be able to make it. I know you'll make it. You know, I was talking to it. On the beach, the tourists are stunned. जो क्रैश लैंडिंग की थी, पूरा वीडियो किसी ने वहां पे बनाया था, कैद किया था अपने वीडियो कैमरे के अंदर ये पूरा सीन। प्लेन जो है जब पानी से टकराता है तब उसकी स्पीड जो थी 370 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की है। First bump, fairly gentle, and I sort of breathed a sigh of relief. Wow. As soon as we touched the water, it was quite violent. Then the second bump was like a 30-mile-an-hour auto accident. I had a feeling the plane was not going to hold. The third bump, and I said, uh-oh, I'm dead. And I blacked out. Oh my God! Oh no! The ditching was very rough. The aircraft broke apart into 3 pieces. The cockpit broke off and the tail end broke off, so we started to go down. There was water gushing in on both sides. The passengers who survived the initial impact then now struggling to come out from this shattered wreckage. अब जबकि पानी घुस रहा है प्लेन में, तो जिन लोगों ने अपने लाइफ जैकेट्स पहले से इन्फ्लेट कर दिए थे, वो अब ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि पानी आता हुआ इन लोगों को सीलिंग की तरफ ट्रैप कर देता है। सीलिंग यानी कि प्लेन का सीलिंग की तरफ ट्रैप हो जाते हैं लोग बढ़ते हुए पानी में। In that kind of panic, people do all sorts of things that maybe are not rational. The life jackets make it very difficult to swim under the water. Many passengers cannot escape the sinking cabin. The aircraft was full of water. I have no fear of water, having done competitive swimming in school. And I went for my seatbelt, and I couldn't find it buckled. So I moved my hand down to my knee and found it, pulled it open, and I pushed out. And I looked at the back of the aircraft. I could see some light at the end, and I decided to swim out in that direction. As I swam out, one of the passengers trying to get out of the seat grabbed my leg. And I said to myself, oh my God, this can cause me to drown. But I decided not to fight back. And they pulled themselves out and let go of my leg. And then I continued to swim out the back of the aircraft and swam to the surface. I was really exhausted. I felt very tired. When I looked up, I said, okay, could this be heaven? Because I wasn't really sure whether I was alive or dead. I was trying to tell the co-pilot to get out. Then he was not there. Then I said, okay, then it's about time for me to go out. I woke up, was floating in the water, and I went, hey, I'm alive. I looked for my wife who'd been sitting on my right, and she was gone. My heart sank. Then I looked to my left, and she was now on my left. She had swirled around and swapped. We were out floating in the ocean. You can see what looks like an uninhabited cliff. It might be a tropical island. It's like a movie, you know. When I leveled out and looked at sea level, I saw all these boats, these tourist boats, beautiful sails and all that, and I said, I must still be on Earth. When I looked around me, I could see all these people, life jackets and bits and pieces of debris, broken seats, floating bodies. As I swam towards the beach, I saw this passport, which was a Kenyan passport. And I stopped and opened the passport, and believe it or not, it was mine.
So I took the passport and folded it and put it in my pocket and continued to swim. Udaan moves to some cargo which has become loose from the plane. वो ऊपर कार्गो के ऊपर चढ़ जाते हैं और अपनी वेट करते हैं रेस्क्यू होने का। प्लेन जो था बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और कई टुकड़ों में बट गया था। I saw things scattered around me, the tail of the airplane far away from me. I never expected something like would happen. All I was expecting was to evacuate the passengers safely and myself. अबाटे स्विम्स टू सेफ्टी, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि उनके बाकी पैसेंजर्स का क्या हुआ, क्या वो बच पाए कि नहीं बच पाए, या उनकी जो लैंडिंग थी कितनी सफलतापूर्वक रही वो लैंडिंग, और उन हाईजैकर्स का क्या हुआ, इस बारे में उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था अभी तक। उड़ने के 4 घंटे तक जद्दोजहद करने के बाद हाईजैकर्स के साथ कैप्टन अबाटे ने अपना प्लेन क्रैश लैंड किया था समुद्र में नियर द कोरोलोस आइलैंड। उनका प्लेन तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन शायद उनकी स्किल्स ने कितने ही पैसेंजर्स की जान बचाई होगी उस दिन। क्योंकि अबाटे को अपना प्लेन डिच भी करना पड़ा, लेकिन उन्हें समुद्र तट के करीब ही डिच किया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसेंजर्स जो है काफी बच गए होंगे, और जो प्लेन जब अंदर पानी में जाएगा तो काफी डिस्टेंस गहराई में नहीं जाएगा, क्योंकि समुद्र तल तो काफी निकट ही होगा उस जगह पे डिच करने के। Fortunately, the water was very shallow. In some cases, people were able to get out. वहाँ के स्थानीय लोग और टूरिस्ट सब मदद करने को तैयार हो जाते हैं, सब मदद करने के लिए बढ़ते हैं, और कुछ ग्रुप ऑफ स्कूबा डाइवर्स which had narrowly missed the giant aircraft, वो भी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं वहाँ पे। कुछ फ्रेंच डॉक्टर्स भी वहाँ रह रहे थे उस रिसोर्ट में, और वो भी फटाफट मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आखिरकार जो 175 लोग उस जहाज में सवार थे उसमें से 50 बच जाते हैं। और अबाटे ने जो भी किया था उसकी वजह से हो सकता है कि अगर वो नहीं करते अबाटे जो उन्होंने किया था, तो कितनी ही और जानें चली जाती। विदाउट हिज इंजन और उसके फ्लैप्स, कैप्टन अबाटे ने जो है 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने प्लेन को लैंड किया था, और ये जो स्पीड है वो तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा है, जो कि नॉर्मल आइडल लैंडिंग के लिए चाहिए होती है। Once the captain made the decision that he had to ditch, the best thing that he could do was keep the airplane as close to land as possible. अबाटे ने ये भी कोशिश करी थी कि वो जो एयरक्राफ्ट है अपना लैंड करे, जितना स्मूथली कर सकते हैं उसको उस लैंडिंग में करने की कोशिश करी थी उन्होंने। और उन्होंने आखिरी क्षण पे अपने प्लेन को भी मोड़ दिया था, जिससे कि जो वो वेव्स जो समुद्री लहरें थी उनके पैरेलल उतरे, ना कि उसके अंदर उतरे वो। एंड एज सून एज द प्लेन हिट द वाटर, इट केम आउट ऑफ अबाटे's कंट्रोल। The airplane touched down left wing low, so the left wing actually grabbed the water. The 767's massive low-sling engine dug into the water, and it made the aircraft turn around. The airplane would have wanted to turn around that left wing or cartwheel. That's a lot of energy to dissipate very quickly. That's what caused the breakup sequence. The airplane broke up into 4 or 5 pieces, and that's what caused a lot of the fatalities. जो यात्रियों में पैनिक आ गया था उसकी वजह से भी जो जाने गई, हो सकता है कुछ जाने बच जाती अगर पैसेंजर्स इतने पैनिक नहीं होते। और कैप्टन अबाटे ने जो इंस्ट्रक्शन दी थी उसको भी कई लोगों ने नहीं माना था, और उन्होंने अपने लाइफ जैकेट्स को इन्फ्लेट कर लिए थे। The life vest wants to keep you buoyant or try to drive you straight up, and that could hamper and restrict your ability to get out of your seat. In some cases, people were still strapped in their seat when the airplane sank, and they unfortunately drowned. माओ अमीन, जिन्होंने की पैसेंजर्स को रैली किया था टू फाइट दी हाईजैकर्स, उनकी डेथ इंस्टेंटली हो जाती है।
Mo had survived everything. He had more than 9 lives. And the idea that he should just be on an ordinary standard flight, when the kind of news story that he wasn't aware of, hadn't been assigned to, caught up with him, and to be killed in this way, has a kind of horrid irony about it. और जो हाईजैकर्स जिन्होंने मना कर दिया था लैंडिंग के वक्त वो बैठे नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया था कि वो बैठेंगे नहीं. They also died during this crash. In the days after the disaster, the other pieces of the puzzle also became clearer. और जैसा कि हाईजैकर्स ने बताया था शुरुआत में कि वो टोटल 11 लोग हैं, वो एक्चुअली में 3 ही थे. लेकिन कौन थे वो ऐसे डेस्परेट लोग और क्या उनका मकसद था? They were imprisoned, thrown in jail, persecuted and tortured by the government. They didn't specify which government, at least to the best of my understanding, and that they had escaped from jail and that they were going to make history. They said they have friends in Australia and they want to get united with them. They wanted to go into a second country where they get the refugee status and have a better living. Before 9/11, it was very easy for anybody to get access to the cockpit and the pilots. You don't do what we say, we'll blow this plane out of the sky. Despite having seen so many hijackings during the past 2 decades, एयरलाइन कंपनी ने फिर भी कॉकपिट को सिक्योर करने के लिए कुछ भी नहीं किया. Do you want to die? We're gonna die anyway. So shall we kill you? ETH 961 के hijackers were never linked to any religious fundamentals or political organization. जो इस फ्लाइट के साथ हुआ उससे जो है it poses very great danger to those hijackers who do not place any value on their own lives. We will die together. For years, there were people in security saying we have to strengthen that cockpit door. We have to be able to exclude anyone from coming through that door and getting control of that aircraft, whatever the reason. Whether the airlines didn't want to spend the money, they didn't see it as a threat, it didn't happen. After 9/11, every aircraft now has done that carries passengers, that has that capability of being hijacked. Nothing is inevitable. Nobody is immune to anything. It could be 1 in a million, but it can happen. कैप्टन अबाटे और उनके को-पायलट को कितने ही अवार्ड मिले अलग-अलग संस्थानों के द्वारा for their action and skills displayed during this hijacking. I said, it's good that I am alive, and the world has understood what I had gone through. और इस हादसे के बाद भी दोनों कैप्टन और को-पायलट they continue to work for Ethiopian Airlines. So इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का. और ये शो आप सुन रहे थे आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. और आज के शो में हमने चर्चा करी थी 1996 की एक घटना, द हाईजैकिंग ऑफ इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट ETH 961. अगर आपको मेरा शो पसंद आया हो या आप उसके बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हो तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं. मेरी मेल आईडी है bhamri.r@gmail.com, यानी कि bhambri.r@gmail.com. तो दीजिए इजाजत मुझे यानी कि आपके दोस्त आपके होस्ट भामरी को समेटने की आज का शो. मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन ठीक इसी समय और ठीक इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर. तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस.